Okay, and I start the class. Ladies and gentlemen, today I have two objectives, and the objectives are the following, as you can see on your screen. The objective is because, as you know, we are covering the TCP/IP suite, we are covering the TCP/IP suite. That is our main objective. And by using this TCP/IP suite, any application can work. And we are taking as an example HTTP traffic, which means there is a HTTP client and there is a HTTP server. Very simple example can be that if, for example, I go to the any browser, so you know the browser is a HTTP client. So here I write, for example, www.netacad.com. So this is the URL. This is the URL. So when I click this, so definitely there is some server, maybe anywhere, which is in US, belonging to Cisco, and it gave me the response. So I hope it will be interesting for you to learn that how your TCP/IP model works, and you send a request which is www.netacad.com. For example, if I click it yes, and I get some page, which we'll see within a few seconds. And yeah, you got this page. So which means from where this page came? It came from US and displayed on my screen. How it happened? I hope that it will be interesting to learn, and you will be giving your full attention. So do you understand what is my objective today? My objective is that by using the TCP/IP suite, because we have understood that there are four models. One is the one which is used in the internet is the TCP/IP model. The second is the OSI model. The third one is, or was, not is, was the Novel NetWare model. And the last one was the AppleTalk. So AppleTalk and NetWare, Novel NetWare are no more used. They are obsolete. They have been thrown away. And now we have only the TCP/IP model which is being used. So how this TCP/IP model help us to have a communication between two applications? And the example which I am taking today is HTTP, which you use every day. Ladies and gentlemen, is there anything which is missing, which is not clear about the objective? If the objectives are not clear, definitely we will not be able to understand. But if the objectives are clear, then we can track that. Can I proceed? Harim, Nurul Haq, Nadeem, objective clear है? Okay. तो फिर आगे बढ़ते हैं. Why the online students are silent? They don't have the chat, mic, or they are sleeping. What's the issue? Now there is something in the chat. And chat is saying, yes, sir, objective is clear. Okay, nice. So let me proceed then. So ladies and gentlemen, if you look at the network which I am using, very simple network. The simple network is like my machine, which is a web client, which is using an application which is basically a client. And what is the name of this application? A browser, which may be a Chrome, which may be a Firefox, which may be Edge, which may be Internet Explorer. So it can be anyone, right? So that's the reason that application is lying on this machine. That's the reason it is called web client. And let it be, there is a server, maybe in US, on which this www.netacad.com is residing, is here. So I'm assuming for understanding purpose that they are directly connected to one another. Although in reality, you understand that your client and server, client may be at the one end of the world of the globe, and the second may be, the destination may be at the other end of the globe. Okay. So hoping that this lecture will be interesting. So ladies and gentlemen, what I do, if you look at this part where my cursor is moving,
I hope you can see it. And if you can't, I can use the pen and show you this part. Where now you see the red lines. Here are two buttons. One is the real time and the other one is the simulation. In the real mode is like for example, I wrote www.netacad.com and I pressed the enter key and I got the response back. That is the real time. However, when I use the simulation, then instead of moving forward in the time, we move on the event base. Then the first event will complete, then it may ask me that whether you need the second, the third, the fourth, the fifth, and so on. Are you getting my point? So you can have the more details of a communication you can see. That's the reason, that is a big advantage of Cisco Packet Tracer, which provides you simulation mode in which you can understand the communication in a better way. Got it? Is it clear? So that's the reason I am, instead of using the real mode, which is by default, which is, as you can see, the simulation is grayed out. It means presently, or whenever you start your packet tracer, you are in the real mode, real time. However, whenever you want to see the inner details, you must go to the simulation mode. So I am going to the simulation mode. That's the reason I am stopping my annotate and I am clicking the simulation. Now, ladies and gentlemen, you can see here that if I make it a little larger, you will see that there are 5 columns here in the simulation panel. How many? 5. You can see here all 5. Yeah. With time, last device, add device, and type. So there are 5 devices, 5 columns in the event list. So what will happen between for communication between the 2 devices or multiple devices, that will be shown here in the simulation panel. So that is a big advantage. Furthermore, you can see here, ladies and gentlemen, that what protocols I want to use or I want to see. I can select here from the filter, an event list filter. So you can see, Harim, that what protocol is available to me in the event list? Shabash. Ji, Harim, which protocol is available for me? The answer is HTTP. Yeah. But if it is not available, I can make the change. How? I will show and none. So you can see now it is none. Now if I try to make a communication between a client and a server, nothing will be here because I am grabbing nothing, because none of the protocol is available for me. But how I can choose the protocol of my choice? As I said, my choice today is that I want to study which protocol? HTTP. So I need to choose the HTTP for my simulation. Okay. So ladies and gentlemen, how I can do this? I will go again to the show and show all, and all the protocols which are available can be seen here. But I'm not interested in all of them. They will create a lot of traffic. And the real traffic which I want, in which I am interested, probably will be difficult to search. So what I do, I go to edit filters. Edit filters, all are selected because all are here. So what I need to do, you can see some of the protocols are from IP version 4, some of the protocols are from IP version 6, some of the protocols are miscellaneous. You can see them. So where you are interested, that is important. So I go to here and I uncheck all. I uncheck all. You can see here, all have been removed. And I'm not interested for a time being in the ARP, in the DNS, in ICMP, in BGP, in EIGRP, in OSPF, in DHCP, in HSRP, in RIP. Sorry, I'm not interested because I'm interested in HTTP, as I said earlier.
Similarly, I'm not interested in the IPv6 version protocols. I'm not interested in all the miscellaneous protocols, but I'm only interested in HTTP. Even I can use the HTTPS as well if I am interested. You know the difference between the HTTP and HTTPS. HTTPS is the secure version of the HTTP, you may say. Okay. And it has been selected and I cross it. As you can see here, it is none here for the time being. But as I will click it cross, you will see that the HTTP is available for me. Clear? Is there any question from the online students? Tahreem, Nurul Haq, Hareem. Is it clear up to this point? Okay. So I can see. Okay. Whenever you have any question, any problem, please let me know. Okay. Okay. Let's move further. Now what I do, as I opened the browser, how I will open a browser on my web client? I will double click it so that this window will appear. And in this window, I will go to the desktop. And in the desktop, I will take the web browser. I will go to the web browser. So you can see I clicked the web browser. It is not fancy like the one like Chrome and others, but for experimental purpose, it is nice. So you can see that the browser will open in just a minute or within a minute. Okay. Yeah. So the browser is open. So now there are two ways. One is that I should enter here the IP address of this machine, which is my destination, which is my web server, or I should know the URL of this machine. So memorizing the IP address of all the servers in the world is near to impossible because they are in billions. So, but remembering the URL is simple, like www.facebook.com, youtube.com, netacad.com, and many more. So in this example, which is basically, do remember, this is in your course, this example, and the number of this example is 3. Do remember, this example is 3.5.5. This is available in netacad as an example, as a task, which is numbered as 3.5.5. And even if you cannot, if you say that sorry, it is difficult to search it, so I have provided you both. You can see in your WhatsApp, I have provided you this document as well as this PKA file. So you can download it from here, or you can go to the netacad and you can download from there as well. Okay. Right. Now, ladies and gentlemen, I go back to my task and what I want to see, if I open, for example, if I open this document 3.55 and you will tell me then चलें इसको यहीं पे ओपन कर लेते हैं, तो you will find it here. It is already open 3.55. So what is the address of the destination? The address of the destination is www.osi.local. So it can have any name. It depends upon you. So ladies and gentlemen, please do remember it is www.osi.local. So I go there on my web browser and type here www.local, sorry, osi.local, sorry, .local, my God, local, and I click next. I click go. So what happened? That is the beauty of the simulation mode, that only the first step it is asking me, and we call it event driven. Now events will be occur one after the other, but at my choice. I can stop them anywhere.
So how I can proceed? You can see this one. You can see here in the play control, there are 3 buttons. If I click the middle one, so it is just like a real time. Tuck, 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 all the maybe 4 step, 10 step, whatever the number of steps are, all will happen and the result will be displayed on this simulation panel. If I want to go back, this is for back. And if I want to go 1 step forward, I can click this right arrow. So you can see I clicked this arrow once. I click the go, but I have received nothing in my browser. Am I right? आपने लिखा गलत, चेक करें. आपने लिखना है http://www.osi.local. If we can see it from here again so that it is visible on the screen, and if I can make it a little larger, it is very clear now. www.osi.local. Is it safe? What about the anyone online student who is performing? Because our physical student is saying that it is giving us a osi.local is giving him unresolved. It means the DNS is not working. So I will check his problem, but please go ahead, online student, for the time being. Line जीरा, लाइन इधर, ताकि आपका मसले को हम देख लें क्यों ऐसे हरकत कर रहा है. www.osi.local. www.osi.local and click go. So I should stop it first and I should remove it as well and take the browser again, and we will see here as well. And let's see what is in the chat. Yes, unresolved आ रहा है. चेक करते हैं अभी हरीम कि क्यों आ रहा है. कि मैंने www.osi.local and click OK. Go ahead, and I click this one for the time being. Although 1 step जाना is more better, लेकिन आपको इसे देखना चाहता हूँ क्या वाकई इधर देखते हैं क्यों ये अनरिजॉल्व दे रहा है. Go and 1 step further. Sorry, तो पेपर यहाँ बन गया. And then is the okay, that's good. 1, इसको खुला रख देते हैं. तो नेक्स्ट को क्लिक करते हैं. तो ये और पेज देखिए, एक आपने यहाँ बनाया और इधर चला गया, वेब सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट चली गई. फिर हम देखते हैं कि वापस इसको ओपन करते हैं ताकि आपके सामने हो सब कुछ. दिस इज योर विंडो. We show here. And I click again. And again, oh, the response has been received. Let's see what is in the response. And response is saying you have successfully accessed the home page for the web server. So I send you what I will recommend you. वापस नहीं. नहीं, कम्युनिटी का कोई मसला नहीं है, दोनों तरफ ग्रीन है. अगर आप इसको पिंग भी कर लें तो it should work. The address here is, I do remember, that is 192.168.1.254. नहीं, इसका तो IP नहीं है.
तो आईपी जुड़ा हुआ है, नो आईपी एड्रेस। इस तरह करें। चलो ठीक है, मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। उधर जाए मैं आपके लिए, क्योंकि उनका भी ये मसला है, तो हमारा शायद ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन जो हमने आपको फाइल दी वो ठीक नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये कहूंगा कि आप जाएं ब्राउजर पे, कोई मुश्किल नहीं है। ब्राउजर पे लॉगिन करें। ये आपने लॉगिन कर दिया, ब्राउजर पे लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आप अपने ITN 9 में जाएं। ये आप लॉगिन, इसको आपने लॉन्च कोर्स किया, और लॉन्च कोर्स में करके आपका ये मॉड्यूल 1 to 3 का पार्ट है। तो ये मैंने कोर्स कंटेंट्स को क्लिक कर दिया, ये 1 to 3 को ओपन हो जाएगा अभी चंद सेकंड्स में। जी ये ओपन हो गया। 1 में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट 3 में है, जैसे मैंने कहा। और 3 में भी 5.5 में है। तो ये देखें 3.5.5, इसको आप क्लिक करें। ये आपने क्लिक किया जुई, तो देखें आप इसके ऊपर भाग के पहुंच गए। ये आप इस पे पहुंच गए, और यहाँ पे ये जो सेकंड फाइल है, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें अपने पास। इन्वेस्टिगेट द TCP-IP एंड OSI मॉडल इन एक्शन, इसको डाउनलोड कर लें। शाबाश। जब कर लें ऑनलाइन स्टूडेंट तो मुझे बता दें। Tahreem has lost the connection probably. So we have Harim and Nurul Haq on online. And Tahreem has joined us again. Good. So Tahreem, go to the yournetacad.com, go to 3.5.5, and if you have any problem, I can copy this and send you in here as well. Here it is pasted. So you should go to this address, URL, and go to this packet tracer and download it with you. It is a small file, will be downloaded within a few seconds. Is it done? Hareem, Nurul Haq and Tahreem, please ensure that। और साथ ही मैं एक और काम भी करता हूं कि इस फाइल को मैं दोबारा सेंड कर देता हूं, ताकि एक दफा फिर हो जाए ये डॉक्यूमेंट्स। एंड 3.55 इज दिस वन, एंड आई सेंड इट अगेन। तो आपको दोबारा भी ये फाइल मैंने भेज दी। तो आपकी मर्जी की इस फाइल को सेव एज करके अपने पास सेव कर लें, और फिर इसको ओपन कर लें पैकेट ट्रेसर में, या जो मैंने आपको लिंक भेजा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाउ टू गेट समथिंग फ्रॉम दी netacad.com, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। जब कंप्लीट हो जाए, ओपन हो जाए, तो मुझे बताएं। What is the scenario with you, Nurulhaq? You are calm, silent. Have you installed your packet tracer or still waiting? If it is installed with you, then just you have to download either from the NetAcad or from the one which I sent to you on a packet on your WhatsApp group. Download it, open it, and let me know that it is available now. Done, Nadeem? हो रहा है, कोई मसला नहीं, करें आराम से।
तो अब आपको मेरी स्क्रीन पे कम से कम ये नजर आ रहा है कि क्लाइंट एक टिक शो कर रहा है। यही तो फायदा है सिमुलेशन मोड का, कि वो मुझे बता रहा है कि जो उसने रिक्वेस्ट भेजी थी HTTP रिक्वेस्ट, उसका उसको HTTP रिस्पॉन्स आ गया है। सो ही शोइंग यू ए स्माइली फेस, यू मे से, which means happy face, which is showing that the client has received what is desired, what was desired by the client. जब हो जाए तो मुझे बताएं, शाबाश। तो may I move further? It is a very small size file. If I can see here, it is probably, it is 616 kilobytes, so it is very small. Looking at the files sizes which we normally have nowadays, it is around 600 kilobytes, small file. No luck, when we will finish this session after around 9 minutes, do you have the capability to send the Zoom link again? ओके हरीम, यू सेड दैट डाउनलोड कर लिया है सर। तो डाउनलोड हो गया है तो उसको आप डबल क्लिक करें ताकि पैकेट ट्रेसर में ओपन हो जाए। ओके, शाबाश, कम ऑन, व्हेन डन प्लीज लेट मी नो। व्हाट इज योर स्टेटस नदीम? नेटवर्क इशू है? इन द चैट इट इज सेइंग डन सर, ओपन कर लिया, गुड। ओपन कर लिया तो आप अपने वेब क्लाइंट को डबल क्लिक करें हरीम। बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को शेयर खत्म करता हूं, आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें, मैं आपको गाइड करूंगा ताकि बाकी लोग देख सकें, क्योंकि यहाँ तो हो चुका है आपके उससे। आई होप यू नो हाउ टू शेयर द स्क्रीन। एंड आई कैन मल्टीपल को मैं अलाउ करता हूं और स्टॉप शेयरिंग करता हूं मैं, और हरीम को वो देता हूं कि हरीम ने क्योंकि कर लिया है तो आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर दें ताकि आपकी स्क्रीन से हम दूसरों को फायदा दें। आर यू इंटरेस्टेड हरीम? हरीम खान सर, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ। ओके, तो अभी आपने लैपटॉप पे नहीं? Is there anyone? Tarim, are you are from the laptop, or Nurul Haq, you are from the laptop? Anyone can show his screen, share his screen, and I will guide you. In this way, you will be learning in the better way because it will give you an opportunity to participate. चलिए, मोबाइल वाले नहीं, जो जिसके अगर कोई लैपटॉप में कोई भी नहीं है तो फिर मुझे बता दें, आई कैन प्रोसीड। लेकिन आई ऑलवेज एडवाइज कि पहले तो फिजिकली आए, अगर फिजिकल नहीं आते, कोई रीजन है तो
सेकंड ऑप्शन सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने किसी कमरे में बैठ के लैपटॉप से करें। तहरीन भी मोबाइल से है और हरीन भी प्रॉब्ली मोबाइल से है, तो शायद ये आपके मोबाइल में ये चीज़ नहीं चल रही, तो इशू जो है वो अ, हरीम से करिए सर फोन से ज्वाइन किया है, फिर फोन पर देख के लैपटॉप पर साथ साथ। ओके, चलें फिर मैं करता हूं, ताकि आपको, मैं स्क्रीन अपनी दोबारा शेयर कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन बैक। ओके, now ladies and gentlemen, what I am doing here, look at here very carefully. What I am doing here, मैं पहले पैकेट के ऊपर जाके क्लिक करता हूं जिसके ऊपर लिखा है HTTP, क्योंकि मैंने सिर्फ HTTP को अलाउ किया हुआ है, इसलिए और इसके अलावा ही प्रोटोकॉल्स ने काम किया है, लेकिन वो हम देखने के लिए इस वक्त राजी नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज लुक एट हियर, आई एम क्लिकिंग द HTTP. As I click the HTTP, you can see here. जी, तो you can see what? जी, तो you can, क्या हो रहा है? तो I have a, yeah, you can see here that I have two tabs. One is the OSI model and the other one is the outbound PDU details. यानी कि ये अब मैं किस डिवाइस पे हूं, आई एम एट वेब क्लाइंट, which means I am here. This first packet is definitely generated as a request by the web client. Okay, so that is the reason it doesn't show you this part. This part is totally great. In layer part is totally great because your machine has created an HTTP request, and that is the application layer protocol. Application layer give to the transport layer give to the network layer gives to the data link layer, and finally the physical layer. So it shows you all the details, all the, not the details, only the 5 layers, which is the TCP IP model. Now look at, you can see each and every layer. That is the beauty. Click the HTTP. So you click the HTTP and you can see here, what is written here? The HTTP client sends an HTTP request to the server. So it means your client machine is making an HTTP request to the server. Then this request is given to the next, which is layer 4. So you can see here, which is transport layer. So we will see that send the segment information, the sequence number is 1, the acknowledgement number is 1, and the data length is 102 bytes, which means the request which has been sent here, 102 bytes has been sent towards here. But the important thing is these two ports, the source port, which means the client, the port which is using, which means the application, the client application is using a port which is 1025. It can be any. I'll be explaining it in, and do remember that the ports can be from 0 to 65,535. So I will explain this in a later part of the course. And the server port is which one? 80. So HTTP always talk on port number 80. So that's the reason it has chosen port number 80. Then you can see here as well that it is showing that the source IP address, which means the client says that my IP is 192.168.1.1, and it is saying that my destination is 192.168.1.254. So the IP address of this machine, which is the server, is this one. Then it is saying to the data link layer that the client has, we mean the client has a MAC address, which is the 48 bits, is this one, 0060.47ca.4DEE, and the destination
is 000196A9.401D. So it is giving you some details. It is showing you some details. And then these bits are converted into the signals and sent toward the server. Does it make sense to everyone? Ladies and gentlemen, Nurhaq, be ready. I have less than a minute. The connection will be dropped and you have to provide us the link then. Okay. And then you have to make me host as well so that I may share the screen and can record the as well. G, is there any question from any student? Hareem, Tahreem, Ishtiaq has left us. Nurul Haq. Okay, so we continued. That's great. Now we are back. So you can see here. Thank you, Nurul Haq. So I hope you have seen this, that the 5 layers you can see very comfortably now. Because इन लेयर क्यों नहीं है? क्योंकि इस डिवाइस को किसी ने दिया नहीं, ये आगे भेज रहा है, तो सिर्फ आउट लेयर इज देयर. अगर ये इसको मिलता और ये जवाब देता तो फिर इन लेयर भी होगा और आउट लेयर भी होगा. अभी आपको दिखाऊंगा. अब अगर मैं इसको आउटबाउंड इसको यहां पे दिखा दूं, आउटबाउंड पीडीयू डिटेल्स, तो एक एक लेयर का आपको बताएगा. ये देखें जी, पूरे यहाँ पे बता रहा है दिस इज लेयर 2. सर लेयर 4 टीसीपी पोर्ट 1 क्या क्या मतलब है? दिस इज हरीम. ओके ओके हरीम, let me explain then. If you are interested to learn this, although we have a complete part here, but no issue. Ladies and gentlemen, हरीम, look at here. जब ये एप्लीकेशन, मिसाल आपको पता है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर. Like for example, presently I am using Zoom, I am using WhatsApp, I am using, if I show you even this browser, even if I show you this browser, my browser, you will be convinced that I am using multiple applications now. I'm connected to the MATLAB, I'm connected with the EC Council, I'm connected with the Python, I am connected with many, Purdue University and many things. So, which means I have multiple applications, like application number 1, but it's nice that you are asking. Application number 1, application number 2, application number 3, application number 4, and up to application number n. Now what happens? Now, this application is giving its data to transport layer. This layer is also giving it to the transport layer. This application is also giving it to the transport layer. Now, when now the question is that when the response will come, how the machine will come to know okay, this should go to the application 1 or to 2 or to 3. And if you look at here, even you may feel that the 3 data which are going to the single transport layer, they may mix. So which means iska matlab if this is WhatsApp, for example, this is Facebook, for example, this is YouTube, for example, so which means, and this is Zoom, for example, this is NetAcad, for example, so their data will all mix. That's the reason to keep them separate. We have the logical ports, which is an address. So you may say this is a port, this is a port, this is a port. Like now you took the example, if I, instead of using the WhatsApp, I write here your choice, which is HTTP. Now the HTTP, here the source is using 1025 or 26. It can take any number from 0 to 65,535. Bataunga कि these ports are again divided into 3 different types, but for the time it is not required. So it is telling that whenever the response will come,
it will be only for the HTTP, it will go to the port number 1025. Let करें. This is Facebook. It is using port number 1026, for example. This YouTube is using port number, for example, 1030. So whenever they will be sending through this, the transport layer now knows that if I have to give response to the Facebook, I have to give. So where we are connected. Okay. So whenever we will give this transport layer, TCP, for example, or UDP, for example, that have to give a response to the Facebook application, it will be giving it to the 1026. Whenever the same transport layer will be giving response to the YouTube, it will be using 1030. In this way, the data of a different application will never mix. और यही होता है कि हरीम ने कभी ये नहीं देखा कि व्हाट्सएप पे कुछ भेजे तो फेसबुक पे जा रहा हो, फेसबुक पे कुछ भेजे तो वो यूट्यूब पे जा रहा हो, यूट्यूब पे कुछ भेजे तो वो नेटअकैड के पास जा रहा हो. इट नेवर हैपेंस. जी हरीम. Come on. Is it understandable or not? And if I look at your response, yes, समझ में आ गया sir. That's great. So because you are among all, you are the only engineer, graduate engineer. So you must understand all of these simple knowledge. And this is skill as well, because we use all this knowledge for different purposes then. It may be for programming, for example, for cyber security, for cloud security, for IoT security, for automation, and many, many things. Anyhow, for switching, for routing, for many things. Okay. So here what I want to show you, this is your layer number 2. This is your layer number 3. So layer number 2 may, all things are important, but the most important is the destination address and the source address. And do remember, these addresses are called MAC addresses. These addresses are called MAC addresses, and they are 48-bit long. And if you want to show them in a hexadecimal, because they are in hexadecimal, so they are divided by 4 करलें, so they are 12 hexadecimal characters. And you can see here 4 plus 4 plus 4. Clear? Similarly, this is this device MAC address 0060477CA.4DEE, and this is the MAC address of the destination, which means the server. Can you see it? Can you understand it now? And this is basically your data, which is the HTTP request. And the above this all is the header, and after this is the trailer. Is it clear, Nurul Haq, Hareem, Tahreem, Savera? Yes, sir. Okay. Okay, everyone good? Okay, then it will go to the next layer, which is layer number 3. And layer number 3 may we will be explaining all of these fields, because you can see here is the order. First 4-bit, next 4-bit, next 8-bit, next 16 bits. So there is an order, which is called syntax. And everything have a certain meaning, which means semantic. That's the reason we say every protocol. Here the protocol which is shown is IP version 4. IP version 4. This is the header of Ethernet. Layer 2. So important is the source IP and the destination IP. तो अभी हमने कहा था कि इसका IP एड्रेस जो है वो 192.168.1.1 है, जबकि डेस्टिनेशन का 1.254 है. 168.192.168.1.254 है. तो देखें एग्जैक्टली वो चीज यहाँ लिखी हुई है. नजर आ रहा है ना? इसी तरह ये तो हो गया लेयर 2, लेयर 3. अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं एक लेयर और नीचे चला जाऊं, which is the transport layer, and your HTTP uses TCP.
your I change the color green now. This is the TCP as you can see here. TCP में अभी आपने कहा था पोर्ट, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि मेरी एप्लीकेशन के साथ ट्रांसपोर्ट के साथ जो टॉक हो रही है दैट इज ऑन पोर्ट नंबर 1025 और it is not fixed, it may change, and the destination port is fixed which is 80, which is the well known port. बाकियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग इस पे हम अभी नहीं बात कर रहे, जस्ट ये बता रहा हूं कि इस हेडर के अंदर सारी वो इंफॉर्मेशन जो हमने कल भी कहा था वो इस मशीन ने डाली हुई है। इसी तरह अगर मैं फर्दर नीचे चला जाऊं तो HTTP के ऊपर क्या होगा, देख लो, HTTP के ऊपर है आपकी HTTP रिक्वेस्ट, और अगर आप HTTP आपने क्या रिक्वेस्ट की थी, हरीम, तहरीम, नूरुल हक, आई सवेरा, नदीम, क्या रिक्वेस्ट की थी, www.osi.local। देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट की थी या हम झूठ बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा। देख लो यही रिक्वेस्ट आपने की हुई है जेंटलमैन, होस्ट इज इक्वल टू www.osi.local। तो आपकी एप्लीकेशन लेयर ने ये रिक्वेस्ट करके टीसीपी के हवाले किया, टीसीपी ने आईपी के हवाले किया, आईपी ने डेटा लिंक लेयर के हवाले किया, डेटा लिंक लेयर ने उसको इस नेटवर्क के ऊपर गिरा दिया। देखिए कितना क्लियरली नजर आ रहा है सब कुछ, जो कि हमें पहले नेटवर्क लगता था कि कोई अलफ लैला की कहानी है, अब वो नहीं, हमें रियलिटी नजर आ रही है। ये तो हो गया जी पैकेट जो आपने बनाया और वो पैकेट आपने सर्वर की तरफ निकाल दिया। अब देखिए जी दूसरे पैकेट को क्लिक करते हैं, ये मैंने दूसरे को क्लिक किया, इतनी देर में मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि वो तो आ गया है, लेकिन इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना दे। तो ये जी सारा क्लियर हो गया। अब देखिए पहले ने जब इस डिवाइस ने यानी कि आपके वेब क्लाइंट ने जब ये सारी चीजें बना ली तो किसके हवाले कर दी, अपनी लेयर, इस लेयर से अपने डेटा को इस नेटवर्क पे, इस मीडियम पे डाल दिए, विच इज फास्ट इथरनेट 0। अब क्या होगा, ये चीज पहुंचेगी किस, और यहां देख लो कहता है कि इस वक्त मैं किस डिवाइस पे हूं, वेब क्लाइंट, यहां भी नजर आ रहा है। इसको अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त मैं किस डिवाइस पे हूं, वेब क्लाइंट। अब मैं चला गया, मैंने इस वेब क्लाइंट ने अपना ये बनाई चीज रिक्वेस्ट वेब सर्वर की तरफ भेज दी। अब मैं वेब सर्वर पे यानी इस मशीन पे आके देखना चाहता हूं, हाउ आई क्लिक इट जेंटलमैन। आई होप यू विल बी इंजॉइंग दिस बिकॉज अब आपको चीजें नजर आ रही हैं। तो देखें जी नजर आती है कि नहीं आती, अभी क्लियर हो जाएगा। जी ये आपको नजर आ गया। अब देखिए कि हुआ क्या, अब हुआ क्या कि, और इज माई स्क्रीन शेयर विद यू जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको नजर आ रहा है कि इसकी इन लेयर भी है और आउट लेयर भी है, यानी जो पैकेट आपके वेब क्लाइंट ने भेजा वो इसकी इन लेयर के ऊपर चला गया। देखिए एरो भी नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये डेटा इसके पास आया, फिर ये इन तमाम लेयर से गुजर के इसकी एप्लीकेशन के पास गया, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द सर्वर, फिर एप्लीकेशन ऑफ द सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। तो देखिए ये एरो आपको नजर आ रहा है और फिर ये डाउन मूव होगा, और फिर देखिए आपको एरो नजर आ रहा है। तो ये क्लियर आपको बता रहा है कि जी जो रिक्वेस्ट आई वो मेरी पोर्ट ईथरनेट के ऊपर रिसीव हुई। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फास्ट ईथरनेट 0 रिसीव द फ्रेम, किस, ये जो रिसीव द फ्रेम, हु रिसीव द फ्रेम, वेब सर्वर। एंड इसका सोर्स क्या था, वो सर्वर नहीं है, क्लाइंट था, क्लाइंट ने भेजा था। अब देखिए इस, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो जो इधर है ये सिर्फ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोर्स डेस्टिनेशन बन जाएगी। अभी सोर्स क्या था, ये था, डेस्टिनेशन क्या था, ये था। सोर्स का आईपी 1.1 था, डेस्टिनेशन का आईपी 1.254 है।
सोर्स पोर्ट 1025 थी, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 थी, ये पोर्ट HTTP थी। गुड। अब अगर मैं यहां पे आपको देखिए यहाँ दो, ये अगर आप ये चीजें देखना चाहें तो इनबाउंड PDU को क्लिक कर दें। ये मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये सारी डिटेल्स आपको उसी तरह दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब ये मैं OSI मॉडल को वापस क्लिक कर दूं तो दैट विल गो टू दी सर्वर का जो HTTP है। क्लियर? अब देखो, इसको देखो तो ये क्या कह रहा है, द सर्वर सेंड बैक द रिप्लाई टू दी क्लाइंट। तो उसके लिए उसने रिप्लाई बनाना शुरू कर दिया। अब रिप्लाई में क्या होगा, लाजमी तौर पे जो भी इसने मांगा था, क्या मांगा था, हमने देखा था कि इसने मांगा था, इसने मांगा ये, यू हैव सक्सेसफुली एक्सेस्ड दी होम पेज ऑफ दी वेब सर्वर। ये चीज लिखी हुई क्लाइंट को मिलनी चाहिए। चेक करते हैं किसने भेजी हुई है, क्या मजाक कर रहे हैं जेंटलमैन। हम इसके जाते हैं आउटबाउंड में ताकि आपको दिखा सकूं, ये देखें। और आखिर में जाके एप्लीकेशन लेयर पे जाता हूं, ये एप्लीकेशन लेयर, और इसको जरा गौर से देखें। ये क्लाइंट ने इसको, अच्छा इसने क्लाइंट ने रिस्पांस देके इसको क्लोज कर दिया कनेक्शन। इससे पहले 170 बाइट्स इसने भेजा और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो इसको हम चेक करते हैं जी। हम इसको सबसे पहले थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको यहां पे नजर आएगा, यहां पे नजर आएगा कि जो पोर्ट सोर्स थी वो डेस्टिनेशन बन गई, और जो डेस्टिनेशन थी वो क्या बन गई, सोर्स बन गई। जो सोर्स का IP था यहाँ पे 1.1, वो डेस्टिनेशन का IP बन गया, और जो डेस्टिनेशन का था वो सोर्स बन गया। उल्टा हो गया ना, अभी चीज ने वापस आना है। इसी तरह मैक एड्रेसेस भी उल्टे हो गए, और इसने भी अपने इस पोर्ट से इसकी तरफ निकाल दिया। यहाँ पर जो डेस्टिनेशन था वो तो फिक्स था, वहां पर भी फिक्स होगा 80 जो है। जी बिल्कुल, पोर्ट नंबर, इधर दोनों पोर्ट एक दूसरे के साथ अगर फिक्स नहीं होंगे, जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल, तो फिर तो अगर मिसाल के तौर 80 के बजाय यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 120 को देना शुरू कर देता, इज्यूम 80 की बजाय, तो ये उसको पहचानेगा नहीं। इसको तो पता कि मैं 80 से बात कर रहा हूँ, 80 से जवाब आना है, अदरवाइज इट विल बी समथिंग मैलिशियस मे बी। ठीक है। अब आए आखिरी पे, जब क्लाइंट पे ये चीज पहुंची, चेक करते हैं। ये है हमारा आखिरी जो वेब क्लाइंट के पास पहुंचा जी। अब देखें, अब पहुंचा, आगे किसी को देना नहीं है, तो आउट लेयर खाली है, सिर्फ इनबाउंड मौजूद है। उसी तरह देखें, ये एरो नजर आ रहा है कि इसको रिसीव हुआ, क्लाइंट को, किसको रिसीव हुआ, वेब क्लाइंट को। और वेब क्लाइंट को क्या चीज है, वो क्या है, HTTP क्लाइंट है। वेब क्लाइंट क्या है, HTTP क्लाइंट। अब मैं इसके सबसे पहले आपको HTTP दिखाता हूं, और HTTP में देखते हैं कि क्या चीज हमारे पास आई है। ये जी क्लाइंट पे आए, तो ये मैसेज इसको दिखाना तो चाहिए। इसने मैसेज की बजाय कहा कि जी बस मेरी बात हो गई है और कनेक्शन 170 बाइट जो उसने भेजे थे, मुझे 170 बाइट्स मिल गए। वो आता है, अगर रियल में हम देखें तो लिखा हुआ आता है, वो यहाँ पे इसने बताया नहीं, एग्जैक्टली बताया जाता है कि ये चीज आई। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से अगर आप देखें तो अगेन जब इसका है तो ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, पहले चेक कर लो कि वाकई ये किसको मिला है, ये किसके लिए मिला है, ये मिला है वेब क्लाइंट को। तो आप यहां पे आ जाएं, और यहां पे आके आप इसको, क्योंकि आपने देख लिया, इसको हम कर देते हैं खत्म, और हम इंटरेस्टेड हैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में। और यहां पे मैं लिखता हूं ipconfig/all। चेक करो यही सब कुछ है कि नहीं। ये कहता है कि, ये कहता है कि क्लाइंट कहता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। चेक करो कि क्लाइंट का मैक एड्रेस लेयर 2 पे ये है 00600047CA 4D एग्जैक्टली वही है। IP क्या है 192.168.1.1
देख लो, यही है 192.168.1.1। तो इसका मतलब है कि जो चीज इसके पास है एग्जैक्टली वो हमें नेटवर्क दिखा रहा है, वो हमें नेटवर्क दिखा रहा है। इज इट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश, नूरुल हक, हरीम, सवेरा, तहरीम। क्या समझ आ रहा है कि जो चीजें लेयर स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं आता, क्लास में आप लोग लेंगे क्लासेस, और हरीम ने तो ली हुई है क्लासेस इसकी, प्रॉब्ली इसके 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं नेटवर्क रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, लेकिन ये चीजें समझ नहीं आती थी वहां। लेकिन अब आपने क्योंकि देखना शुरू कर दिया, और इसी तरह एग्जैक्टली हम लाइव नेटवर्क में भी ये दिखा सकते हैं और दिखाएंगे। आप कहेंगे कि जी लाइव नेटवर्क पे तो ये सिमुलेटर काम नहीं करेगा, तो सिमुलेटर है, तो हमारे पास और टूल्स भी हैं, वो हम आपसे इंस्टॉल करवाएंगे। जैसे मिसाल पे वायरशॉक, हो सकता है कि आप में से सिर्फ हरीम ने ही नाम सुना हो, और शायद के नदीम ने भी सुना हो, और अगर नहीं सुना तो यू विल बी यूजिंग इट एंड यू विल बी लुकिंग एट द पैकेट सिमिलरली, द ट्रैफिक सिमिलर। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? शाबाश। इज देयर एनी एम्बिग्विटी, एनी थिंग विच यू फील कि जी आपको ये चीज समझ नहीं आई, ताकि वो आपको क्लियर कर दी जाए? शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्योंकि इसके बाद हम एक एक लेयर को पकड़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर। यानी कि हमारा अब इसके बाद कोर्स जो है वो फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेगा, फिर डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, फिर आईपी लेयर, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, और फिर एप्लीकेशन लेयर। जब हम ये तमाम लेयर पढ़ लेंगे तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अभी ये चीजें मेरी क्लियर नहीं समझ आ रही, तो इट इज बेटर कि यू शुड आस्क एज मेनी क्वेश्चन यू वांट, बट एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी नदीम, क्लियर है? व्हाट अबाउट यू हरीम, तहरीम? You do both have name which are very very similar. However, the meaning may be different. Clear? Good. Good. तो अब आपने करना ये है, ओके गुड, एरीन, तहरीम, दैट्स ग्रेट। नूरुल हक क्लियर है, समझ आ रही है? सवेरा, वेयर आर यू, समझ आ रही है? जी, ओके नाइस। तो ये है बेसिकली, ये जो एक नामुमकिन सा एक टॉपिक हमें बना दिया जाता है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। लेकिन अब आपको क्लियर होना शुरू हो गया कि किस तरह ये लेयर्स में दुनिया ने इस पूरे नेटवर्किंग को डिवाइड किया, और हर एक लेयर का, हर एक प्रोटोकॉल का, एचटीटीपी का अपना फंक्शन है, टीसीपी का अपना फंक्शन है, आईपी का अपना फंक्शन है, ईथरनेट का अपना फंक्शन है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना। एक चीज और बताऊं, दैट इज इंटरेस्टिंग, अच्छा है मुझे याद आ गया। अब आप समझेंगे किस तरह यहाँ पे एचटीटीपी ने काम किया है, तो देखते हैं कि क्या सिर्फ एचटीटीपी ने काम किया है कि नहीं। मैं इसको करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, शो ऑल। तो ये तो हो गया नन। दोबारा करता हूं शो ऑल, ओ नहीं, ये तो बहुत से प्रोटोकॉल्स ने काम किया है, सिर्फ एचटीटीपी ने नहीं किया। बहुत से प्रोटोकॉल्स जिसमें डीएनएस भी आपको नजर आ रहा है, आर्प भी नजर आ रहा है, डीएनएस भी नजर आ रहा है, टीसीपी भी नजर आ रहा है, एचटीटीपी भी नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो वो एचटीटीपी के 4 पैकेट वो सिर्फ ये हैं, बाकी तो और भी काफी काम हुए हुए हैं यहाँ पे, जो कि हमने गौर ही नहीं किया, हमने उनको सुप्रेस कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। अब आपका सवाल ये मुझ पे बनता है कि जी और हम इनको डिटेल में भी फर्दर देखेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन मुझ पे ये बनता है कि सबसे पहले डीएनएस क्या करता है, ये डीएनएस क्या करता है? जेंटलमैन, आपने यहां पे लिखा, इफ यू रिमेंबर, www.osi. आपने यहां पे जब पहली बार इसको इस्तेमाल किया, तो यू रोट हेयर www
.osi.local, ये आपने लिखा। कंप्यूटर तो ये नहीं समझता, तो ये रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता। इसने लाजमी तौर पे किसके किसके पास गया होगा, डीएनएस के पास गया होगा कि जी मुझे इस यूआरएल का आईपी दो। इसने इसको आईपी लौटाया होगा जो कि है 192.168.1.250। चेक करते हैं सच भी बोल रहे हैं कि झूठ है, देख लेते हैं जी। पहला डीएनएस का पैकेट ये है, तो इसको हम आ जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, मुझे याद आया तो उससे आपका फायदा हो गया। डीएनएस के पैकेट को खोलते हैं जी। ये डीएनएस का पैकेट खुल गया। तो देख लें, ये लेयर 7 पे कौन सी एप्लीकेशन ने काम किया है, डीएनएस। अब एचटीटीपी ने नहीं किया, क्योंकि एचटीटीपी जा ही नहीं सकता जब तक डेस्टिनेशन का मेरे पास आईपी ना हो। तो देखें, डीएनएस ने एप्लीकेशन स्टार्ट की, उसने कहा जी मैं पोर्ट नंबर 1025 से बात कर रहा हूं, और डेस्टिनेशन का पोर्ट, डीएनएस जो पोर्ट इस्तेमाल करता है उसका पोर्ट नंबर 80 नहीं 53 है, फिक्स है। इसने कहा कि जी मेरा एड्रेस तो ये है, डीएनएस साहब जिसका आईपी एड्रेस इसको पहले से पता है, जैसे अभी आपने यहां पे देखा, आपने अभी यहां पे देखा कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है उसको डीएचसीपी बताता है कि तुम्हारा डीएनएस कौन है। तो इसने डीएनएस को 2.254 को इस सर्वर को कहा कि मुझे, आदो को उसको नहीं पता कि यही उसका वेब सर्वर भी है, लेकिन उससे उसने उसका क्या मांगा, आईपी मांगा। सिवेरा में वो दे दो चार्जर यानी। अब इसकी डिटेल में जाके देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छा समझ आ जाए। तो ये हमारा डीएनएस, देखिए ये यूडीपी, यहाँ पे देखो, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा था, टीसीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी था, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, यूडीपी। दैट इज डिफरेंट। इसे पता चला कि डीएनएस इज यूजिंग यूडीपी, एचटीटीपी वाज यूजिंग टीसीपी। गुड। अब अगर आप देखें, अब अगर आप यहां पे देखें उसी तरह सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। अब अगर मैं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसमें जाता हूं आउटबाउंड में, आईपी में, आईपी उसी तरह, गुड, आईपी हो गया। यूडीपी, यूडीपी के बाद डीएनएस हेडर। डीएनएस कह रहा है कि क्वेरी उसने क्या की है कि जी मुझे ये किसी ने दिया है यूआरएल, इसका मुझे आईपी दो। और आपने यही लिखा था ना www.osi.local। तो ये डीएनएस को हवाले किया गया, भेजा गया, क्वेरी की गई डीएनएस से। बात समझ आ रही है ना। इसी तरह अगर हम इसको क्लोज कर दें, आखिरी डीएनएस का पैकेट, ये 4 पैकेट क्यों है ये मैं बताऊंगा। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिसको हम दोरा कहते हैं, DORA, दोरा। याद रखने के लिए दोरा, ऐसे दोरा नहीं है, DORA, DORA। D stands for, शाबाश, एनीवन, डिस्कवर। O for offer, R for request, and A for acknowledgement। तो जब ये चौथा स्टेप कंप्लीट होता है तो इसको इसका इस यूआरएल का आईपी मिल जाता है। सॉरी, ये दोहरा इज फॉर द डीएचसीपी, दिस इज नॉट डीएचसीपी। तो ये दिस इज डिफरेंट। इसको मैं रब करता हूँ, नहीं इसको अभी हम नहीं डिस्कस करते। दिस इज फॉर डीएचसीपी, ये मैंने रब कर दिया। अब मैं वापस जाता हूं इसके चौथे पैकेट पे। देखें चौथे पैकेट में क्या है, चेक करें कि इसके चौथे पैकेट में क्या है। ये है फोर्थ पैकेट डीएनएस का, जो कि वेब सर्वर ने जवाब में भेजा। तो उसने क्या भेजा होगा, अंडरस्टैंडेबल है कि उसने इसका आईपी भेजा होगा, वेब का। चेक कर लेते हैं, इसमें जाते हैं। ये उसी तरह लेयर 2 का हेडर, ये लेयर 3 का हेडर, ये लेयर 4 का हेडर, ये डीएचसीपी का हेडर, और ये जो क्यूरी आपने की थी, ये उस क्यूरी का क्या है, रिप्लाई, आंसर। आंसर में क्या लिखा है, कहता है आपने मुझसे पूछा www.osi.local, और इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.250। तो ये रिस्पांस जब पहुंचा वापस इस क्लाइंट के पास, तो इसको पता चला कि अच्छा ये है मेरा
मेरे आईपी एड्रेस मेरी डेस्टिनेशन का। इनिशियली इसको नहीं पता था। अब बात समझ आई। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने सीखा अभी कि अगर अगर इनिशियली आपको कभी भी नहीं पता होता आपके आईपी एड्रेस, जैसे आप लिखते हैं zoom.com, यदि मैं जूम से कनेक्टेड हूं मुझे तो उसका आईपी नहीं पता। मैंने netacad.com लिखा, मुझे उसका भी आईपी नहीं पता, क्योंकि मुझे यूआरएल्स याद है। लेकिन मेरे लिए ये एप्लीकेशन, डीएनएस की एप्लीकेशन, ये काम करती है। बात समझ आ रही? इसी तरह अगर हम इसके बाद पहला टीसीपी पैकेट देखें, जो कि आप लाजमी तौर पे क्या हुआ जब इसको आईपी मिला, तो ये क्लाइंट ने इस सर्वर के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज डन थ्रू टीसीपी। तो चेक कर लो, देख लो, टीसीपी अब एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो ये भेजेगा दैट विल बी अ सिंक पैकेट। ये भी आपको नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पे इस फ्लैग में लिखा हुआ है कि ये सिंक पैकेट है, यानी ये बता रहा है इसको कि जेंटलमैन वेब सर्वर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप क्या खुश हो मेरे साथ बात करने में, इंटरेस्टेड हो? ठीक है। फिर ये 3 वे हैंडशेक करेंगे, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं 3 पैकेट गए हैं, विच इज कॉल्ड 3 वे हैंडशेक। शायद आपने सुना हो, और अगर नहीं तो कम से कम हरीम ने जरूर सुना होगा 3 वे हैंडशेक। ये वो 3 वे हैंडशेक है which is done between the client, web client and web server. जी डीएनएस को आईपी बताएगा, सेपरेट पोर्ट डीएनएस करेंगे। जी बिल्कुल। इसके बाद ये आर्प क्यों हुआ, चलें ये भी क्लियर करते हैं जी। जब इसको पता चल, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि इस डीएनएस के बाद ये आर्प क्यों हुआ। आर्प स्टैंड फॉर, एक और आपने क्वेश्चन कर लिया, इसको मैं रिप्लाई कर दूं। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दैट इज आर्प। अब इसका काम क्या है? मसला ये है कि मुझे ये, अब है तो यही डीएनएस, लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूं चलो ये मेरा डीएनएस अलग है। इस डीएनएस ने मुझे बता दिया कि इसका विच इज www.osi.local, इसका आईपी एड्रेस जो है वो है 192.168.1.254, यही बताया ना लेकिन ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मुझे ये पता है कि मेरा आईपी जो है वो है 192.168.1.1। ये दोनों एक ही नेटवर्क में है, और ये एक ही यहां नजर भी आ रहा है कि दोनों एक ही नेटवर्क में। इसको अपना मैक एड्रेस तो पता है, इसको अपना मैक एड्रेस तो पता है। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूं, इसको ओपन करता हूं, और इसका डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखाया, और आपको पता है कि इसको अपना मैक एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, पता है कि ये है, लेकिन इसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता। ये काम है आर्प। ये काम है आर्प कि आपको अपना आईपी तो पता है, आपको अपना आईपी तो पता है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। सॉरी, आपको डेस्टिनेशन का मैक आईपी तो पता लग गया डीएनएस, इस डीएनएस से, लेकिन आपको डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, वो 48 बिट नहीं पता। इस पर्पस के लिए व्हाट प्रोसेस यू यूज? आर। तो अगर हम इस पैकेट को भी मैं ओपन कर लूं, इस पैकेट को भी अगर मैं ओपन कर लूं, ये मैंने कर लिया, ये वेब क्लाइंट ने आर्प किया, तो देख लो इसने आर्प जो है ये लेयर 2 का फिनोमेना है। तो देखिए लेयर 2 ने कौन सा पैकेट भेजा है? आर्प पैकेट। और आर्प पैकेट में ये जो ऑल एफ्स हैं, ऑल एफ्स का मतलब ये होता है ब्रॉडकास्ट। ऑल एफ्स का क्या मतलब होता है हरीम, तहरीम, सवेरा? क्या मतलब होता है? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि इसको नहीं पता कि किसको मैं कहूं, तो उसने सब पूरे नेटवर्क में जितने भी थे उन सबको कहा कि जनाब जिसका आईपी एड्रेस जो है वो 1.254 है, वो मुझे अपना मैक भेजे। तो इसने एक ब्रॉडकास्ट की, और क्योंकि खुशकिस्मती जहां पे एक ही था, ये कहेगा मैं हूं 1.254 और मेरा मैक एड्रेस ये है।
Ji, ladies and gentlemen, does it make sense? Is it interesting to learn? नूरुल हक, हरीम, सवेरा, तहरीम, बात समझ आ रही है? यस सर। तो देखें कि कितने प्रोसेसेस होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि नेटवर्किंग आसान नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई समझाने वाला हो और कोई समझने के लिए इंटरेस्टेड हो तो देयर इज नो इशू। जी डीएनएस और आप करते करते चल रहे हैं, डीएनएस आईपी लेता है आपने पैकेट्स के लिए। जी बिल्कुल। इसके बाद ये दो दफा मैंने आप पैकेट्स से, उसके बाद भी 3 दफा डीएनएस। जी, ये डीएनएस का इसने जब रिक्वेस्ट की है तो ये एक दफा देखिए, ये पहली दफा सिर्फ पैकेट तैयार हुआ, फिर वो पैकेट भेजा। देख लो, ये सिर्फ आखिरी लेयर दिखाएगा, ये सिर्फ आखिरी लेयर। तो ये भेजा, फिर ये क्लाइंट ने भेजा, सर्वर पे पहुंचा, और फिर सर्वर ने जवाब दिया और वो जवाब यहाँ आया। सारा प्रोसेस होगा ना। 4 पैकेट बिल्कुल, 4 पैकेट नहीं, पैकेट 2 ही है। लेकिन यहां से वो पैकेट, पहला पैकेट तैयार हुआ, ये देखिए पैकेट तैयार हुआ, लेयर 1 इसमें इसलिए इसने ग्रेड की हुई है। फिर ये जब नेक्स्ट पैकेट को मैं क्लिक करता हूं तो इसमें लेयर 1 को इसने वो कर दिया, एक्टिव कर दिया। इसके बाद भेज दिया गया, तो जो पैकेट बना था वो भेज दिया। अब ये पैकेट पहुंच गया, ये पैकेट ये देख लो पहुंच गया, और फिर इसका जवाब आएगा। तो आए तो गया, एक ही मैसेज आया, एक ही मैसेज, लेकिन उसके लिए 4 स्टेप्स हुए। सर ये एक के बाद इसके दरमियान में जो आप 3 पैकेट्स इसके दरमियान में, तो ये क्या उसी तरह इसने ब्रॉडकास्ट किया। देखिए, वेब क्लाइंट ने पहले तैयार किया, तैयार करने के बाद इसने सर्वर की तरफ भेज दिया। अब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज इसके पास पहुंचा। जब इसके पास ये ब्रॉडकास्ट मैसेज पहुंचा, ये लेयर 2 का फंक्शन है, लैन का फंक्शन है। इसने अपना देखो मैक एड्रेस इसमें डाल दिया कि जेंटलमैन खफा मत, तो मेरा मैक एड्रेस ये है 001 ब्ला ब्ला। ये मैसेज इसकी तरफ आया, ये पहुंचा तो ये खुश हो गया कि ओ मैंने मैक मिल गया। अब इसके बाद आईपी भी है, मैक भी है, पैकेट बना हुआ HTTP का। देखो, इसके बाद इसने HTTP का पैकेट बनाया। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसने सोर्स का एड्रेस भी इस्तेमाल किया, आईपी भी, डेस्टिनेशन भी, सोर्स मैक भी, डेस्टिनेशन मैक भी। तो जो इसने इस डीएनएस और आर्प के प्रोसेस से हासिल किया, वो सारा यहाँ इस्तेमाल किया, तब इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? बिकॉज आई हैव अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स लेफ्ट। तो इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह ये लेयर्ड स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस काम करती हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन करें, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू, ताकि जब हम एक एक को जब डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर को पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर को पढ़ेंगे, तो कम से कम जनरल हमारे पास कॉन्सेप्ट सारा होना चाहिए। सारी चीजें हमारी रेटिना पे मौजूद होनी चाहिए, जिसको जैसे वो पजल को आपस में आप पिक्चर को मिलाते हैं और पूरी पिक्चर बन जाती है, पीसेस को मिलाते हैं और पूरी पिक्चर बन जाती है। वो पिक्चर तो आपके सामने कंप्लीट बनी हुई होनी चाहिए, ताकि हम उस पर फिर उंगली रखें और कहें देखो ये काम हो रहा है, और आप कहें हाँ वाकई हो रहा है। जी तहरीम, सवेरा, हरीम, नूरुल हक, शाबाश, कमाल, नदीम, क्लियर है? तो मेरा ख्याल से आपने पहली दफा, मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर्स को मरीज को या जो भी पेशेंट होता है उसको खोल के उसके सामने रख दिया जाता है कि देखो ये लीवर है, ये हर्ट है, ये स्टमक है, यहाँ पे ये मसले हैं। वो नजर जब आ जाता है तो डॉक्टर बन जाता है। हम इंजीनियर को बदकिस्मती से ये काम पे लगाते ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ लाइट चली गई है, तो 5 बजे हैं, लेकिन आपकी क्लास खत्म हो गई है, विच इज गुड। और इंशाल्लाह इसको आप इसको जरूर पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 3 है, इस एग्जाम्पल को भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आस्क द क्वेश्चन ऑन योर वेब, ऑन दिस व्हाट्सएप। और इफ यू फील, बात होते हैं जैसे कि जिसके जवाब देना इस पे पॉसिबल नहीं होता, तो यू कैन कम हियर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, or you can ask on the coming Wednesday. We'll be happy to respond. Is it clear, everyone, ladies and gentlemen? Nurul Haq, Hareem, Tahreem. So I'm Yes, sir. closing. Okay. So have a nice weekend,
and see you inshallah on coming Wednesday. Till then, Allah Hafiz. सर ये